Yes, hello students. Now in this video, we'll discuss about connective tissue. Connective tissue is also a type of your animal tissue. Last video we have discussed about epithelial tissue, types of epithelial tissue. 4 types of epithelial tissues were there. One was squamous, stratified, columnar, and your last one was your cuboidal epithelial tissue. Now today we are going to study about connective tissue. Another type of animal tissue is connective tissue. Okay, connective tissue. In yesterday's video I have told you that blood is a type of connective tissue. So in this, the first one we study is blood. This is a type of your connective tissue. Then you have bones. Bones are also your connective tissue. Then cartilages. After cartilages, areolar connective tissue, and the last one is adipose tissue. These are all your types of connective tissue: blood, bones, cartilages, areolar and adipose. ये आपके सारे क्या है? Types of connective tissue है. Blood we have studied in last video also that blood is a type of connective tissue. ब्लड की हेल्प से बहुत सारी चीज़ें, सब्सटेंस जैसे ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट होते हैं, आपका जो वेस्ट है वो आपका बॉडी पार्ट से एक्सक्रीटरी सिस्टम में आता है. ठीक है, ऑल दिस आर द फंक्शंस ऑफ ब्लड. ओके, सो ऑन पेज नंबर 74, कनेक्टिव टिश्यू इन योर बुक. ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. Why would it be called connective tissue? A clue is provided in the introduction of this chapter. Now let us look at the type of tissue in some more details. The cells of connective tissues are loosely spaced and embedded in an intercellular matrix. The matrix may be, अब आपका जो connective tissues के जो सेल होते हैं वो लूज होते हैं, मतलब उनमें क्या होता है? स्पेस होता है. ठीक है, अब आपका ये जो टिश्यू है किससे बना हुआ है? मैट्रिक्स. एंड व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इज योर जेली लाइक फ्लूइड. इट इज जेली लाइक फ्लूइड, डेंस और रिजिड. ठीक है, द नेचर ऑफ द मैट्रिक्स डिफर्स इन कोऑर्डिनेट्स विद द फंक्शन ऑफ द पर्टिकुलर कनेक्टिव टिश्यू. ये आपका जेली लाइक सब्सटेंस है. ये आपका डेंस मतलब क्लोज भी हो सकता है. ठीक है, आपका फ्लूइड यानी फ्लो भी कर सकता है. रिजिड मतलब टाइट भी हो सकता है. इट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू. ओके, दैट इज योर मैट्रिक्स. नाउ इन दिस द फर्स्ट वन इज ब्लड. ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा. अब ब्लड में आपका क्या होता है? प्लाज्मा. व्हाट? ब्लड कंटेन्स प्लाज्मा. प्लाज्मा में क्या होता है आपका? प्लाज्मा, इन प्लाज्मा 3 थिंग्स आर देयर: आरबीसी, red blood cells, WBC, white blood cells and platelets. ये आपका platelets. So all these things are contained in your plasma, और प्लाज्मा किस में होता है? आपका ब्लड में होता है. ठीक है. now what is the function of RBC? RBC रेड कलर के होते हैं जो आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कराते हैं. WBC आपका वाइट ब्लड सेल्स होते हैं. ये आपका जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनसे क्या करते हैं? जर्म से फाइट करते हैं. इनको सोल्जर्स ऑफ द बॉडी भी बोला जाता है. किसको? WBC को. नेक्स्ट इज योर प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स हेल्प्स इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ओके, लेट मी नोट इट डाउन हियर. RBC helps to transport oxygen. Second one is your
जिनको हम सोल्जर्स ऑफ बॉडी बोलते हैं। They fight against the germs. They fight against the germs. Then you have platelets. This helps in the clotting of blood. They helps in the clotting of blood. Okay, so these are the functions of WBC, RBC and platelets. Okay, this you can note it down in your notebook so that you can, whenever you read your chapter, you can easily know what they do. Okay, so blood is a fluid matrix called which have plasma. In plasma there is the RBC, WBC and platelets. The plasma contains proteins, salts and hormones. अब इस प्लाज्मा के पास क्या होता है? प्रोटीन. It has proteins, salt and hormones. ठीक है, ये सारी चीजें आपके प्लाज्मा के पास होती है. ब्लड फ्लोस एंड ट्रांसपोर्ट गैसेस. ब्लड फ्लो करता है, क्या ट्रांसपोर्ट करता है? गैस. ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और CO2 को बाहर निकालता है. ठीक है. डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, हॉर्मोन्स को ट्रांसपोर्ट करता है और वेस्ट मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है. ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स. ओके, सो दिस इज द फंक्शन ऑफ ब्लड. नेक्स्ट वन इज bone. Second type of connective tissue is your bone. बोन. आपको पता है अगर आपके बोन्स नहीं, अगर आपका स्केलेटल सिस्टम नहीं होगा, आपका स्केलेटल किससे बना हुआ है? दैट इज मेड अप ऑफ बोन्स. और इस स्केलेटल सिस्टम की वजह से योर मसल्स आर स्टिक्ड टू योर बॉडी. मसल्स जो जॉइन है बोन्स के साथ में. ठीक है, बोन्स की वजह से ही अब मसल्स जॉइन है. वी आर एबल टू स्टैंड, वी हैव अ प्रॉपर पोस्चर. दैट इज बिकॉज ऑफ द बोन्स. Bones is another type of connective tissue. It forms the framework that supports the body. Bone क्या करता है? It forms framework. Framework यानी structure, एक proper structure बनाता है and supports the body. And body को support देता है. कौन देता है? Bones देते हैं. ठीक है. इट एंकर्स द मसल्स. एंकर मतलब होल्ड करना. मसल्स को होल्ड करता है एंड सपोर्ट्स द मेन ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. आपके मसल्स को होल्ड करता है और जो वेरियस ऑर्गन्स हैं उनको सबको सपोर्ट करता है. लाइक योर ब्रेन इज इनसाइड द स्कल. अगर कोई इंजरी होती है या चोट लगती है तो पहले स्कल पे चोट लगती है, बाद में आपके ब्रेन पे इफेक्ट. अगर कोई सीवियर इंजरी है देन इट अफेक्ट्स योर ब्रेन, क्योंकि स्कल आपके ब्रेन को प्रोटेक्ट कर लेता है. ठीक है, तो ये बहुत सारे. आपका हार्ट इज इनसाइड योर चेस्ट कैविटी. चेस्ट कैविटी किससे बनी हुई है? बोन से बनी हुई है. तो इसलिए आपके बहुत सारे इंटरनल ऑर्गन्स को भी बोन्स क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करता है. ओके, इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू. द एडवांटेज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज फॉर बोन. बोन सेल्स आर एम्बेडेड इन हार्ड मैट्रिक्स. यहाँ हार्ड मैट्रिक्स का होता है. बोन्स किसके बने होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस. कैल्शियम और फॉस्फोरस से आपके बोन्स बने हुए होते हैं. जब दो बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करें उसको हम लिगामेंट बोलते हैं. व्हाट इज लिगामेंट? लिगामेंट्स जहां आप जो दो बोन्स आपस में कनेक्ट करें, विच कनेक्ट्स टू बोन्स टुगेदर, which connect two bones
together. That is your ligament. Another one is your tendon, जो आपके मसल्स को बोन से कनेक्ट करे. दैट इज योर टेंडन्स, विच कनेक्ट्स bones to the muscles to the bones, muscles to the bones. ये आपके टेंडेंस बोले जाते हैं. ओके, सो दिस वाज योर another type of connective tissue, that is bones. Next one is your cartilages. Cartilages are the hard substances in your body. इनको आप सॉफ्ट बोन्स भी बोल सकते हो. जैसे आपके ईयर्स, ईयर क्या है, आप टच करो आपको हार्ड लगेगा. स्किन आपकी सॉफ्ट होती है. आपके ये जो शेप है ना, ये जो ईयर की शेप दी हुई है, ये क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस. आपकी ये नोज लाइनिंग जो है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस. ओके, यहाँ कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, यहाँ आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. कार्टिलेजेस किसके बने हुए होते हैं, प्रोटीन्स एंड शुगर्स. नेक्स्ट वन इज योर कार्टिलेज. इट इज कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन्स एंड शुगर्स. किस चीज से बना है इसका मैट्रिक्स, प्रोटीन्स एंड शुगर से बना हुआ है. बोन्स का कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ था. ब्लड का आपका प्लाज्मा, हार्मोन्स, सॉल्ट्स एंड योर प्रोटीन्स. ओके, कार्टिलेज सॉफ्टन्स बोन सरफेस एट जॉइंट्स एंड इज ऑल्सो प्रेजेंट. कहाँ प्रेजेंट होता है, आपका नोज में, ईयर में, ट्रैकिया, ये आपका फूड पाइप है, वॉइस बॉक्स है, लिंडेक्स. ठीक है, यहाँ पे आपका कार्टिलेज प्रेजेंट होता है. ठीक. नेक्स्ट वन इज योर एरियोरल टिश्यू. एरियोरल टिश्यू आपका मसल्स और स्किन के बीच में जो स्पेस होता है, खाली जो स्पेस बचा होता है, वहाँ आपका एरियोरल टिश्यू प्रेजेंट होता है. वेयर योर एरियोरल टिश्यू इज प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्पेस, मसल्स और आपके जो स्किन के बीच में जो स्पेस है, वहाँ आपका एरियोरल टिश्यू प्रेजेंट होता है. ठीक है. इट फिल्स द स्पेस इनसाइड द ऑर्गन्स, support internal organ and helps in repair of tissue. The last one is your adipose tissue, जिसे हम फैट टिश्यू भी बोलते हैं. आपका जो बॉडी फैट है, वो जो जहाँ स्टोर होता है, कहाँ स्टोर होता है जाकर, वो एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है. आपका बॉडी फैट कहाँ स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है. ठीक है. किस चीज़ से भरा हुआ है, दैट इज filled up of fat globules. So this for your connective tissue. Blood, bones, cartilage, areolar and adipose. These are the type of your connective tissue. Now to our left, one is your muscular tissue and another one is your nerve tissue. That we'll discuss in next video. Thank you. That's all for the day. Two, connective tissue. Group of tissues in the body that maintains the form of the body and its organs and provides cohesion and internal support. The connective tissue includes several types of fibrous tissues that vary only in their density and cellularity, as well as more specialized and recognizable variants. Connective tissues can be divided into three types. 1. Loose connective tissue. 2. Dense connective tissue. 3. Specialized connective tissue. 1. Loose connective tissue. Loosely arranged cells and fibers in a semi-fluid substance is distributed all over the body and support tissues and organs from strain and displacement.
Example, areolar tissue and adipose tissue. Areolar tissue. It is present beneath the skin, serves as a support framework for epithelium. It contains fibroblasts, macrophages and mast cells. Adipose tissue. It is located mainly beneath the skin. Cells of this tissue are specialized to store fat. The excess of nutrients converted into fats and having large storing capacity in this tissue. 2. Dense connective tissue. In this tissue, collagen fibers appears abundantly in the form of bundles and are placed regularly between the cells. It is again divided into two types. A. Dense, regular connective tissue. The collagen fibers are present in rows between many parallel bundles of fibers. Example, tendons. White collagen fibers connect muscle to bone. Ligaments. Yellow elastic fibers connect bone to bone, two bones. B. Dense, irregular connective tissue. It has fibroblasts and many fibers, mostly collagen, present in the skin. 3. Specialized connective tissue. Cartilage, bones and blood are various types of specialized connective tissues. A. Cartilage. The cartilage is made up of cells, chondrocytes. The study of cartilage is chondrology. The cartilage is divided into four types based on the composition of intercellular matrix. They are hyaline, elastic, fibrous, and calcified. B. Bones. Bone is a hard skeletal tissue. Study of bone tissue is called osteology. Bone is composed of cells, fibers and matrix. The matrix is collagenous calcified, hard and constituted by minerals and salts such as calcium phosphate and calcium carbonate. Bones contain matrix, ossein and osteocytes are present in the spaces called lacuna. Limb bones, such as the long bones of the legs, serve weight-bearing functions. Also interact with skeletal muscles to bring out movements. The bones take up the functions such as 1. Support to the body. 2. Production of erythrocytes and white blood cells from the red bone marrow. 3. Protecting vital parts such as heart and brain. 4. Giving shape to the organism. 5. Storage of fat in yellow bone marrow with the advancement of age. C. Blood. Blood is a highly specialized fluid connective tissue consisting of plasma, erythrocytes or red blood cells, RBC, leukocytes or white blood cells, WBC, and platelets. Blood is the main circulatory fluid that helps in the transport of various substances. For more detail about blood, you will learn in chapters Body Fluids and Circulation. 3. Muscle tissue. Muscular tissue is a specialized tissue. It brings out all types of movements in the animal body, has great power of excitation and contraction. The muscular tissue is made up of greatly elongated muscle cells called muscle fibers or
myocytes or sarcocytes. The muscle fibers are made up of minute fibrils called myofibrils. Muscle fibers contract, shorten in response to stimulation, then relax, lengthen, and return to uncontracted state in a coordinated fashion. In general, muscles play an active role in all the movements of the body. Based on the structure and position in the body, muscles are of three types. 1. Skeletal muscle. 2. Smooth muscle. And 3. Cardiac muscle. 1. Skeletal muscles. The striated muscles are generally found attached to the skeleton except the muscles of tongue. Hence, these muscles are called skeletal muscles. In a typical muscle, such as biceps, striated, stripped skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion and it is enclosed by a tough connective tissue sheath. The straight muscles help in the movement of bones and body as a whole. 2. Smooth muscles. The smooth muscles is composed of elongated spindle-shaped fibers with tapering ends and do not show striations. Smooth muscles are found in many parts such as dermis, iris, and ciliary body of eye, wall of gut, ducts of glans, genital ducts, blood vessels, and urinary bladder. It is independent of the will of the organism. Hence, it is also called involuntary muscle. 3. Cardiac muscles. The muscles found in the wall of heart are called cardiac muscles. The presence of dark intercalated discs in specialized regions of the cell membranes of two adjacent fibers functions as boosters of contraction. Intercalated discs allow the wave of contraction to be transmitted from the one cardiac cell to the other. 4. Neural tissue. Neuron forms the structural and functional unit of nervous system. It is responsible for coordinating and controlling many body activities. Normally, the electrical impulse messages traveling through a neuron in one direction. The cells in the nervous tissue that generates and conduct impulses are called neurons or nerve cells. You will study in detail about neural tissue in chapter 21.